Hello, viewers. Welcome once again to your very own STAVKＡ podcast. Today we have with us Lt Col Tyagvir Raghava sir, who has served in the Indian Army for close to 22 years. In today's episode, we'll talk about his early life, his motivation to join the Indian Army, his time in signals, and his post-retirement life, where we'll also talk about his venture. We hope you enjoy the episode. Jai Hind. Thank you, sir. It is great to have you here. Welcome to STAVKAA podcast. Sir, Thank so you, we'll Aditya. Looking yes, forward sir. to great conversation. Yes, sir. Absolutely, sir. सर तो विल स्टार्ट विथ योर अर्ली लाइफ. आपका बचपन कैसा था, अर्ली लाइफ कैसा था, आप अगर थोड़ा वो बता दें. Aditya, I am from a very humble background. मैं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में एक तहसील है अतरौली और उसके पास एक गांव है कखिथल. तो that is place where I was born and brought up. I did my schooling from KMB Inter College. Atrauli is the place. And बस गांव में खेलते पढ़ते गिरते बड़े हो गए. वहां से हमने 12th कर लिया, 10th कर लिया और उसी बीच में कुछ ऐसा रहा कि पेरेंट्स तो ऑलवेज वांटेड कि भाई तुम बायोलॉजी पढ़ो और ग्रेजुएट होके एमबीबीएस करके डॉक्टर बन जाओ, बट डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था. तो जब मैं 10th मैंने पास किया था, आई वाज लिटिल एवरेज से थोड़ा सा बेटर स्टूडेंट था. सो मेरे एक फूफा जी थे जो आर्मी में थे उस टाइम. जब मैं 10th में था तो वो कैप्टन थे. तो वो जब भी मिलते थे तो लगता था कि कुछ तो इनमें डिफरेंट है. यदि इस आदमी को 100 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि भाई ये कहीं अलग ऑर्गेनाइजेशन से हैं. द वे ही स्पीक, द वे ही ड्रेस अप, द वे ही स्टैंड. सो वहाँ उस टाइम मैंने 11th में आते आते एनडीए के एग्जाम दिए थे. और एनडीए के एग्जाम में एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया. आई कुड नॉट मेड इट कट. सो फाइनली फिर 12th वाज द नेचुरल चॉइस. सो आई डिड माय 12th एंड basically very humble background family and absolute rural background, and that is where I came from. राइट सर. सर जैसे आपने एनडीए का बताया, राइट, तो जब आपको मल्टीपल ऐसे फेलियर्स हो रहे थे एनडीए में, तो आप कैसे कोप अप किए सर आप उस चीज से? हाँ, so let me tell you, Aditya, I was very strong right from my childhood, mentally very strong. I always look forward to, मैंने टाइम को बड़ी इंपॉर्टेंस दी हमेशा. और वो मेरे बचपन से ही मेरे दिमाग में ये था कि मैं जो भी टाइम स्पेंड करूं किसी भी एक्टिविटी पे, कल को मुझे ये ना कहना पड़े पीछे कि मैंने रिग्रेट, अरे वो टाइम मैंने यूटिलाइज कर लिया होता तो शायद मेरी परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाती या मैं सक्सेसफुल हो जाता. तो पहली बात तो मैंने कभी भी उस टाइम में ये रियलाइजेशन शुरू से था कि मैंने कभी कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, कोई अननेसेसरी एक्टिविटीज या अननेसेसरी लोगों के साथ गपशप मारने में टाइम वेस्ट नहीं किया. तो उससे मुझे हताशा इसलिए नहीं हुई कभी भी एनडीए से 3 बार फेलियर होने से, क्योंकि एवरी टाइम आई पुट इन माई बेस्ट, नंबर 1. Number 2 is that whenever the result came, my marks were better than the previous one. So if first year if I got 70% around, the next year I got 75%. Third year I got around more than that. I don't remember exactly what marks were there, but it was better than the previous year. तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन रहता था कि यार हाँ मैंने तो मेहनत की, अब मैं मेरिट में नहीं आया, so that is besides the point. And that was also very realization, a self awareness जैसे बोलते हैं. I was self aware कि being from the rural background, अपना जो जनरल नॉलेज का फाउंडेशन था, it was not all that good. Okay. Similarly, the language part, English part was also not good. But being in UP, my mathematics, physics, chemistry, science was very good. So basis on that, I used to get a better marks. But you need to do well in everything holistically to make a cut in the competitive exam. So I never had that kind of regret कि क्यों नहीं हुआ. And but I always learned, failure क्या है,
fail is first attempt in learning. Every time you fail, you learn something. Rather than feeling disgusted, it's better to Right. work hard further and do something better. So ऐसा नहीं हुआ, and I could cope up. My family was very supportive. That was one thing. And secondly, there was no pressure as such ki somebody asking me. Yes, when I went for this engineering part of it, there was a great lesson. There also there were failures, but ultimately I could make it, and I could achieve in life. सबकॉन्शियसली जो मेरे दिमाग में था, इन माई माइंड कि एक दिन आर्मी अफसर बनना है, वो हुआ. बट इट वाज ए लॉन्ग स्टोरी विच वी विल फॉलो इट अप. जी सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो सर आपने बहुत मतलब एक सही चीज बोला कि टाइम वेस्ट करना इज नॉट गुड थिंग, राइट? लोग सोचने सोचने में ही बिता देते हैं और वो टाइम निकल जाता है और फिर रिग्रेट करते हैं। एंड फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको मल्टीपल फेलियर्स होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली से भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग सर। तो सर एसएसबी फेज तक आप मतलब इंटरव्यू तक आप गए थे या फिर एग्जाम्स में ही एनडीए हाँ, का फेलियर? सो एनडीए के तो एग्जाम में ही आई कुड नॉट मेक इट कट. ओके. ओके। ओके। और एक मैं छोटी सी बात ये बताता हूँ कि जी जी। ये जब एनडीए दिया तभी ये बात नहीं थी. मेरे 5th और 6th क्लास में हमेशा, मतलब एवरी क्लास आई टुक इट एज ए चैलेंज, और हर क्लास में लगता था यार इस साल कैसे ही पास हो जाए, अगली साल फिर मेहनत बहुत करेंगे, जबकि मेहनत उस साल भी बहुत की है. बट वो एक फियर ऑफ अननोन हमेशा रहता था. तो ये जी सेम सिचुएशन 8th क्लास में थी, सेम फिर 9th में थी. तो वो एक जो कांस्टेंट एक फियर, और फियर इज ए गुड थिंग. इनफैक्ट लेट मी टेल यू, फियर इज योर फ्रेंड, familiarity is your enemy, and I will tell you why. Because fear makes you do something better. It helps you to take those action which helps you to grow in life. Okay. तो राइट। वो एक एलिमेंट ऑफ जो रहता था ना कि पता नहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, फेल ना हो जाए, तो वो हर ईयर में, एंड दिस वाज आई कैन रिमेम्बर 5th क्लास ऑनवर्ड, ये था कि आई शुड डू बेटर, आई शुड डू बेटर. सो इट इज माय रिकॉर्ड, what I recall from 5th class onward, that every year I did better in getting good percentage or good marks, whether it was in engineering or whether in diploma or whether in 10th, 11th, 12th. Every year I performed better. And that is what it proves ki I never took the time for granted. And that is the reason that you will never feel regret, or you will never say that कि यार मैंने वो कर लिया होता तो शायद वो अच्छा हो जाता. बिकॉज इफ यू आर अच्छा। परफॉर्मिंग वेल, देन आपको रिग्रेट भी नहीं आएगा, और आप और एनकरेज होंगे व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एवरी ईयर बेटर कि यस नेक्स्ट ईयर आई कैन डू इट, एंड दैट शोज इन योर आई मस्ट से इन ग्रोथ इन फ्यूचर. राइट सर। सर आई मीन हैविंग दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस ना इतना अर्ली स्टेज में बहुत लोगों को नहीं होता है सर ये। तो डिड यू कॉन्शियसली डेवलप दिस या फिर यू वर हाँ, लाइक दिस पहले से? एक तो ऐसा था कि मेरे घर में जो माहौल था ना, मेरे कुछ तो जेनेटिकली हो सकता है, आई कैन से नाउ. ओके. क्योंकि माय राइट। ग्रैंडफादर वाज, ही वाज in 1937 he was graduate from Allahabad University. When in Aligarh only there was 10th class, the government ओके। college which you only has the 10th class. Okay. So and then my father was also quite educated one. My mother and grandmother, all everyone gave lot of emphasis on sincerity, being honest, being hardworking, and they used to help me. They used to help me. I remember when I was in the first class or something. You know, हम तो गांव में उस पे पढ़े, तख्ती पे पढ़े, लकड़ी वाली जी तख्ती होती थी हमारे पास. उसमें जो खड़िया जिसे बोलते हैं, उसमें दबात में उसको घोल के और सरकंडे की कलम बना के उससे लिखते थे. So my mother used to that shine that takti in the early in the morning, और फिर उस पर लाइन वाइन बना के हमें भेजा जाता था. तो उस काइंड का जो कमिटमेंट हमारे पेरेंट्स की तरफ से था. फिर
आई रिमेंबर कि मुझे ई बनाना नहीं आता था। तो वो जो कमिटमेंट कहना चाहिए या जो कहना चाहिए परसिस्टेंट, एक बार जब मुझे ई बनाना नहीं आ रहा था तो मैं घंटों बैठ के ई बनाना उसी दिन सीखा। डिस्पाइट दैट कि मदर बोल रही थी कि चल कल कर लेंगे, अब छोड़ दे, हो गया। लेकिन उसी दिन जब तक वो ई बन नहीं गया मेरे से, दैट वाज़ इन अ वेरी अर्ली चाइल्डहुड, माय मदर यूज्ड टू टेल, तब तक मैं हटा नहीं उसे। तो वो बचपन से ये कमिटमेंट था मुझ में कि ये कुछ करना है तो उसको अचीव उसी टाइम, और वो अभी भी है इंसिडेंट। अभी भी मैं किसी चीज़ पे लगता हूँ, चाहे वो रात के 12 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, इफ आई कैन डू इट, आई माइट एज़ वेल अचीव दैट रिजल्ट। तो वो था, एक शुरू से ही वो था मेरे। राइट या सर। नाउ लेट्स कम टू पोस्ट 12, राइट? आपने 12th का एग्जाम दिया, उसके बाद की जर्नी कैसी रही सर? आपने इंजीनियरिंग की एग्जाम्स दिए थे टू गेट हाँ, इनटू अ कॉलेज? so this is also very interesting story, राइट। Aditya, that जी सर। you know, I did appear for engineering exam, I did appear for IIT, I did appear for Aligarh Muslim University, and I also applied because I topped my college in 12th class, in the PCM, overall college I topped it, getting good percentage of that time, 83% PCM. So the principal of my college, he asked me that Dayalwag Engineering College, now it is REC, or it is NIT now. He said that you go there, since your PCM is very good, you will get admission straight. Okay. Yes, competitive exam, I couldn't make it. I did appear, both of them, I could not pass through. And this place, when I went there, and there were no written exam as far as the Alwag Engineering College, so I just filled up the form and submitted it, and I got a call letter. Okay. Now, when I got a call letter from there, I did go for the interview. I did very well in the interview, whatever question technically they asked. Okay. But unfortunately or fortunately, what had happened is that somehow in interview, when they asked me how to fund my education, because there was little financial crisis that time at home. Okay, I can say that. So I could not answer to that question, that how do I fund my education. They were not satisfied probably, the interview board. Despite my doing well in the technical round, probably they did not select me in the interview. Now, since my principal has advised me, because he was from Agra and he knew well about that. So when I came back, this is the place I was very disheartened. Not only because of this, that I could not make it, some people in the neighborhood, because by now I have grown. Okay, as a child, I never bothered about this. People started taunting. वो तो जी। इंजीनियर ही बनेगा, और उससे नीचे तो कुछ बनेगा ही नहीं. These are the kind of people generally say. They might not be meaning anything, but they say. And when this thing happens, so I got uh, trapped into the cocoon. Means I didn't feel like going, even giving the feedback to my own principal, who has encouraged me, who has advised me, who has said that you will make it, you should go there. So I didn't go. But then when it was a summer vacation, because everything happens summer vacation when your engineering exam and all. So what had happened is, then when I went after the school opened, this after summer vacation, principal called me and he asked me what had happened. And I told him, sir, I couldn't make it in that, and this is what the interview happened. So he scolded me very badly. He said, why didn't you come back to me? I could have helped you in that way. I could have explained to them, because he knew somebody there. That there is no reason, because you are so confident that with your PCM you will be able to make it. So that was the one turning point in my life, that you should never give it up. Means whatever is the way, means you should never get disheartened by any failure, any setback. You should always get back to the situation, or you should, जहां भी थोड़ा बहुत भी लाइट दिख रही है टनल में, अंधे में, उस लाइट की तरफ जाओ.
And that is the only time I took that beating from my life. Thereafter, no looking back. The learning was from that so what, even if it has happened, you must see that yes, somebody has told you, somebody has asked you, please go and give a feedback to him. You don't know what solution he might be having for you. So then when this thing happened, I took admission into 3-year diploma engineering. And again, it happened with the marks only, because I had a very good marks. I got admission in that. And उसका एडवांटेज ये हुआ कि since I was good at studies and everything, every year in diploma I topped. All 3 years I was the topper. And not only topper in the diploma engineering, I was also awarded best boy of the institute senior of the institute, the one who get the maximum mark. I was even general secretary of the union of that. I was nominated rather, because I was a neutral person. दो आपस की जो पार्टी थी, जो आपस में झगड़ा करती थी, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, वो उनके आपस में झगड़ा हो गया एनुअल फंक्शन के टाइम में. वो दोनों आके मेरे पास आ गई, बिकॉज आई वाज न्यूट्रल, एंड दे सेड राघव, वी नॉमिनेट यू. एंड प्रिंसिपल आल्सो एग्रीड फॉर दैट, बिकॉज आई वाज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट. दोनों पार्टी मेरे पास आ गई. आई बिकेम द जनरल सेक्रेटरी. सो द ऑल द टॉप मोस्ट पोजिशंस of that institute, whether best boy, institute senior, general secretary, I think that must be the record of that institute as of now. I became that one. And also I was a then editor of English section of that magazine. So this foundation of my diploma helped me to grow further. So then I got admission into IET, that is Institution of Electronics and Telecom Engineers in Delhi, Okay. which was equivalent to a PTech by the UPSC, as well as for higher studies, MTech and all, as well as getting any job or anything. It was treated at par with graduation in electronics and telecommunication. So after diploma, I took admission, I took pickup job. First job I picked up in Hindustan Aeronautics Limited, Nasik. And from there, after having served for 1 year, 7 months, I came to Delhi, where I picked up another job that was in Department of Electronics, Electronic Regional Test Laboratory. And you will be surprised that wherever I went with my kind of that marks which I had in diploma success, everywhere I went, I succeeded. I succeeded in cracking Tata Institute of Fundamental Research, Bombay. I succeeded even in Indian Railways, that was Western Railway. Everywhere I gave interview except 1 or 2 places, I got the job. But at one point of time, you can work at one place only. Yes. So when I was in HL, I tell you the little story. Yes, sir. I applied, I was working in HL, and I was fed up of that working 9 to 5 in the same lab continuously, because I was a man of little adventure, not a chair bound or a desk bound job. So I wanted a change, and I was never satisfied. Let me tell you, I was never satisfied. So I always used to apply, means every like after having done diploma, I was applying literally every day, whatever job was coming, and I was giving interview at least twice a month or so, something like that. And I was getting also calls for interview at least once in a month. It was that situation. So जब HL में था, तो HL में नौकरी कर रहा था. डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली का मैं इंटरव्यू दे के आ गया था. और दिस TIF, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे में ऑलरेडी मेरे पास सिलेक्शन लेटर आ गया था, वहां का इंटरव्यू बीच में दे. अब मेरे पास डायलेमा ये था कि एक जगह मैं नौकरी कर रहा हूँ, एक जगह से मेरे पास ऑफर लेटर आया हुआ है, और एक जगह इंटरव्यू का मैं वेट कर रहा हूँ. हाउ डू आई सेलेक्ट सो दैट आई डोंट रिग्रेट अगेन कि यार मैंने वो क्यों छोड़ दी, वो क्यों नहीं ज्वाइन की.
So that was the dilemma with me. That is way back in 1985. Okay. Finally, what had happened is some friend of mine, हम 8-10 लोग एक साथ ज्वाइन किया था एचएल में. इसमें हम सारे ज्यादातर बैचमेट थे और उसमें से भी सब छोड़ के जा चुके थे. आई वॉज द लास्ट वन, सेकंड लास्ट. एक बंदा तो वहां पूरी साल, मतलब अभी भी वो रिटायर ही वहीं से हुआ. तो उसने मुझे आइडिया दिया कि यार तुम ऐसा करो, वो स्वॉट एनालिसिस तो हमने बाद में पढ़ी. वी डिडंट नो व्हाट इज स्वॉट दैट टाइम. बोले आप लिखो कि आपके जो फायदे के पॉइंट हैं उनको लिखो, आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं हर जॉब के वो लिखो और उनका रेशो ले लो. जिसका रेशो 1 से ज्यादा हो, ज्वाइन दैट. एंड दैट हेल्प मी दैट टाइम टू ज्वाइन इन दिल्ली, बिकॉज पेरेंट्स यहाँ थे, गाजियाबाद में थे. वी यूज्ड टू स्टे दैट टाइम गाजियाबाद. बट हियर आल्सो आई जस्ट वर्कड फॉर 7 months. Because as I told you, I was never satisfied with the desk job and like that. एंड दिल्ली में आने के बाद तो और मुझे लगा कि यार इससे अच्छा तो मैं कहीं बाहर चला जाऊं. सुबह 7 बजे निकलते थे हम और रात के 9-8-9 बजे पहुंचते थे. गाजियाबाद से ट्रेन में बैठना, फिर आके 429 डीटीसी बस पकड़ना, देन रीचिंग गोविंदपुरी में लैब होती थी उसकी, इलेक्ट्रॉनिक रीजनल टेस्ट लेबोरेटरी. एंड ऐसे करते करते बाय द टाइम यू रीच होम यू आर नॉक्ड ऑफ, no creativity, and finally next day starts. So 7 months mein I got fed up to leave Delhi as early as possible, and that is where I applied as a tech. In the meantime मेरे IET complete हो गया, because as a diploma 3 years, 2 years में I completed section A, section B of passing that, which is required for a diploma holder to complete that IET, and my graduation was completed. That time I was working in Delhi. And from there, I applied for this and got SSB. So this is the story till I reached the SSB. राइट सर. तो सर वो प्रोसेस आप एक बार बताएंगे, वो अप्लाई करके एग्जाम होता है या फिर आप डायरेक्टली हाँ. एसएसबी में जाते हो, कैसे होता है वो? So since I applied as a technical graduate entry, okay. जी. Technical graduate के लिए आज भी there is no written test. It is Okay. only you go directly for SSB. तो उसकी भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है आदित्य. हुआ यूं कि सिंस आई वाज वर्किंग इन दिल्ली एंड आई वाज नॉट हैप्पी द वे आई वाज ट्रैवलिंग एवरी डे इन द ट्रैफिक. एंड इतना बुरा हाल होता था उस टाइम 1985-86 में डीटी बस में कि आप यदि सफेद शर्ट पहन के आए बाय द टाइम रीच होम इट डार्क काली हो जाती थी. दैट काइंड ऑफ पॉल्यूशन यूज्ड टू बी देयर बिकॉज ऑफ दैट बसेज, डीजल बसेज एंड ऑल. सो उस लैब में एक पांडे जी होते थे, उन्होंने एक एसएसबी मुझसे पहले दिया था. ओके. तो जब दोबारा ऐड आया और मेरा जब तक ग्रेजुएशन हो गया तो मैंने भी उसको अप्लाई किया और मेरे लिए कॉल लेटर आ गया. अब हुआ यूं कि जब कॉल लेटर आ गया तो हम तो फ्रीकिंग काइंड ऑफ पर्सन थे कि हाँ कोई भी इंटरव्यू आगे चलो दे के आते हैं. ठीक है. आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. जितने सारे जॉब मिलने के बाद में आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. तो अब पेरेंट्स वर वेरी अनहैप्पी विद मी. ही सेड तुमको गवर्नमेंट जॉब मिला हुआ है, अच्छा खासा घर के पास हो, तुम नासिक एचएल नासिक छोड़ के तुम घर पे भी आ गए. दैट वाज ए रिक्वायरमेंट कि घर पे आ जाओ. वहां कोई एकोमोडेशन की प्रॉब्लम थी, सब कुछ था. बट व्हाई यू वांट टू गो टू आर्मी नाउ? सो मदर वाज, आई एम द ओनली सन इन द फैमिली एंड 2 sisters. तो शी वाज आफ्टर मी कि तुम वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये अच्छा है, ठीक है, जो भी है जैसी है, दिस इज गवर्नमेंट सर्विस, बढ़िया. बट देन आई सेड कि टू माय मदर, एंड यू नो माय चाइल्डहुड ड्रीम 10th क्लास में व्हेन जी. आई यूज्ड टू गेट इम्प्रेस्ड फ्रॉम माय, वो सबकॉन्शियसली कहीं दिमाग में बैठा हुआ था कि यार लाइफ तो एक वही है, सबकॉन्शियसली. तो आई टोल्ड माय मदर कि आई जस्ट वांट टू गो एंड सी दैट वेदर आई कैन बी सिलेक्टेड और नॉट. ये मैं प्रॉमिस करके अपनी मदर को बोला कि मैं वहां जाके सिर्फ देखना चाहता हूँ. और सेकंड क्लास की टिकट मिल रही थी ट्रेन की, रहने के लिए वहाँ खाना पीना सब था. मतलब 5 दिन जो होता है एसएसबी में, देयर इज नो जी. एक्सपेंडिचर. तो मैंने कहा जी. मैं जाता हूँ. सो मैं चला गया ये बोल के. अब मेरे साथ एक और बंदा गाजियाबाद का गया था जो वो भी मदर को मिल लिया था. अच्छा, वहां क्या होता है, वहां जाते ही आपका सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है.
तो वो लड़का तो पहले ही दिन जो है पहुंचा और साइकोलॉजिस्ट है उसको तो वो उसी दिन वापस भेजे, उसी दिन बस में आते हैं, ट्रेन स्टेशन से बस लेके आती है और वहां आपको टेस्ट होता है और उसके बाद में जो कुछ लोगों को रख लेते हैं, कुछ लोगों को वापस उसी बस से वापस भेज, तो वो तो वापस आ गया। ना मदर गॉट वरीड कि ये तो वहीं रह गया। एनीवे, फिर वो हमारा 4-5 दिन जो ग्रुप टेस्ट और बाकी जितने भी टेस्ट होते वो सारे टेस्ट हुए। लक वुड हैबिट कि आई डिड ओके एंड वो भी क्लियर हो गए सारे। फिर वो जो फाइनल जब इंटरव्यू होता है जिसमें आपका कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस में यू वॉन्ट बिलीव इट, करीब हमारे वाले बैच में देयर मस्ट बी 100-200 स्टूडेंट्स, ओके, ऑल वेरी हाई फाई सब जगह से। अब उसमें से जब कॉन्फ्रेंस होती है तो दे जस्ट डोंट स्पीक आउट द नेम, व्हाट दे टेल यू द चेस्ट नंबर। तो मुझसे पहले एक चेस्ट नंबर बोला गया, आई थिंक दैट वाज 2 or 3, then mine was 6 number, 6 was called out and one more, only 3 person out of I think 100 plus people, they were called out. Now once this is called out, then you are only kept, rest of them are sent back, and this is another one week has gone into your this group test and interviews and other things. Now one more week is for your medical, okay. मदर गॉट टू वरीड कि ये तो 1 हफ्ता हो गया, इतना तो बताया नहीं था। आई डोंट नो हाउ समहाउ आई कुड मैसेज हर कि इट विल टेक मोर टाइम। सो दिस इज द वे आई क्लियर द एसएसबी। उसके बाद मेडिकल की और कहानी है। सो दिस इज द वे आई क्लियर द एसएसबी। जी सर, मेडिकल की भी कहानी बता दीजिए आप, कैसा था वो 7 days? हाँ, अब उसमें क्या हुआ आदित्य, वो मेडिकल शुरू हुआ तो हम 11 लोगों थे, मतलब ऐसे 2-2 3-3 करके जो 2-3 बैचेज में निकले होंगे, तो उसमें हम 11 लोग फाइनली मेडिकल के लिए अप्रूव थे, जो मेडिकल की कहानी शुरू हो। पहले दिन मेडिकल होता है, तो एक दिन होता है जैसे वो चेस्ट का हो रहा है या हार्ट का हो रहा है, मेडिकल स्पेशलिस्ट करता है, ओके। फिर दूसरे दिन होता है कि ऑर्थोपेडिक का हो रहा है, जो उसमें हड्डी वाला सारा चेक कर रहा है। फिर कुछ और, सो ऐसे 2-3 डॉक्टर, ईएनटी का होता है जो आपका ईएनटी का सारा चेक करता है। तो सारे स्पेशलिस्ट अपनी अपनी चीजें चेक करते हैं। यू विल बी सरप्राइज, इसमें करीब 11 लोगों में ज्यादातर ऐसे थे, कोई कर्नल का बेटा है, कोई ब्रिगेडियर का बेटा है, हमारा कोई कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई कोई कनेक्शन ही नहीं था। सारे एक एक करके आउट होते चले गए। आउट कैसे होते चले गए? किसी का हार्ट मर्मर निकला, किसी की नौकनी निकली, मतलब जिन जो टर्म जिंदगी में सुने नहीं कभी, वो टर्म सब सुनने को मिल रहे थे कि मेडिकली यू आर अनफिट बिकॉज यू हैव ए नॉकनी। नॉकनी मतलब आपके दौड़ने में घुटने जुड़ते। हार्ट मर्मर इज आपका जो बीट है, इट इज अनयूजुअल साउंड। somebody got rejected on a premise कि उसका जो ये एंगल है ना, कोहनी वाला एंगल, इज मोर देन डिजायर्ड बिकॉज यू कांट डू ए सल्यूट प्रॉपरली। रिजेक्टेड, परमानेंट डिसेबिलिटी, नथिंग कैन बी डन। You won't be surprised that out of 11, 10 got rejected by the time we reached on the last day, that was ICE. All 10 got rejected. Permanently or temporary. Temporary means they will refer you for some this thing कि आपका यदि साइनस है तो साइनस का ऑपरेशन करा के आ जाइए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, एंड इफ यू आर ओके देन यू आर सेट। परमानेंट डिसेबिलिटी मीन्स नौकनी है तो है, यू कांट डू एनीथिंग। 11th डे जब आईज का टेस्ट हुआ, सो and there is not one test, there are 22 tests. I still remember, can't forget that form, 22 tests. And that 22 tests, one by one, everything done. A test like look left, how much you can look left, right, up, down, uh, long distance vision, short distance vision, night vision, means all 22. And then finally was the color vision. My every test got cleared. When it came to the color perception, color vision, he showed me a book. एक छोटी सी कलर परसेप्शन की बुक आती है, उसमें लेटर्स बने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो स्पॉट्स लगा के, एंड देन यू हैव टू रीड। टू माय सरप्राइज,
I couldn't read some of the letters. Some of the letters, digits written or something, I could not read. And the doctor was also surprised that बाकी सारे टेस्ट ठीक हैं, and then he found me medically unfit permanent. Color vision is permanent unfit. And you imagine the person who comes, he gets selected in SSB till in Q, and his name is announced. So you are high. Yes. You are high. And suddenly in medical, you found rejected, then you are low. Now, I remember that day when I got rejected in engineering admission, and I didn't go back to my principal, and then he scolded me. The lesson Right. learned was that never give up. Never give up. तो होता क्या है कि when you are rejected, whether temporarily or permanently, what they do is they give you a form to appeal to the higher hospital. My SSB was in Bhopal, and Bhopal is a military hospital only. So they gave me an option to appeal in Delhi base hospital. वो फॉर्म देते हैं, भर के देते हैं, and then you can go and submit, and then they will give you date when you can come and have it checked. The reason is that कि जो MH हैं, they are not equipped with all the gadgets to check you in detail when you are permanently unfit. Whereas this bigger hospital in Delhi and all, they got all kind of facility. But I was too disheartened. But with the commitment कि yes, इन्होंने फॉर्म दिया है, तो I will certainly do the appeal now. Unlike when I got rejected that time and I sat in home and didn't come out of my house. Okay, Right. that learning I did that time. So Aditya, when I came, I had some time, and I was working in Delhi. You know that I was already working. Yes. So before going to that appeal, in Ghaziabad में we used to stay. दो तीन जो eye specialists थे, we went to everyone and got my eye checked. Now this time even my mother supported me. She also came with me, and she also went to doctor, and she said, you never had a problem otherwise from childhood. ये तो अभी पता लग रहा है कि हाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम है. तो वो एक मोहन हॉस्पिटल है, वहां जाके हमने दिखाया. तो वो भी they checked it only by using that book, and I tried to learn or remember those letters. My mother used to read it, and I was not able to read it. Some of them, not all of them, but some of them. And she also wanted to help me. You know, when the son is in trouble, then every parent would like to help you. Anyway, so with all this background कि भाई प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई शक नहीं है. ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गलत बता दिया है, but we were confirmed कि there is a issue. But I said I will not give up. I will go and go for a appeal, and I went there. तो दिल्ली तो मैं जाता ही था. दिल्ली में ऑफिस से ही गोविंदपुरी से बस पकड़ी डीटीसी की, पहुंच गए अपना आर्मी हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल दिल्ली में. वो कैंट में था, धौलाकुआ के पास. एंड एज ए नॉर्मल, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कि किसी के जुगाड़ लगाना, किसी से बात करें, कुछ नहीं, बिकॉज वी डिडंट हैव एनीथिंग. वहां जाके डॉक्टर को रिपोर्ट किया. डॉक्टर ने कुछ देर वेट करने को बोला. देन ही कॉल्ड मी इनसाइड. इट वाज एब्सोल्यूट डार्क रूम, and that dark room he made me sit comfortably. Then he checked me thoroughly for good about more than 1 hour, or maybe 1.5 hours or 2. Multiple ways he checked me. Multiple ways. Sometimes some lights, you know, वो जो रेलवे की लाइट्स होती है ना, रेड ग्रीन और दिस थिंग, तो उसकी छोटी छोटी लाइट्स थी. फिर सम गोटी जो उस तरह की होती है, अपना चेस की जिसकी गोटियां डिफरेंट कलर की, वो घुमा घुमा के. सो फाइनली ही वाज ट्राइंग टू चेक कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कभी काले को सफेद बोल रहा हूँ, सफेद को रेड बोल रहा हूँ, और रेड को ब्लैक बोल रहा हूँ. सो दैट वाज नॉट द केस. That was not the only thing. My colors were weak, probably identifying between sometimes the red and मतलब यदि minor distinction है तो probably there was some. So finally जब ये हो गया, he cleared me. He said you are okay.
He said me that you are okay for army, Okay. not for air force or navy, but वहाँ कलर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, बट नेवी आर्मी के लिए यू आर ओके. एंड ओके कैसे हुआ कि देर आर 4 कैटेगराइजेशन ऑफ कलर परसेप्शन. Hmm. CP1, which is the strongest color, CP2 is the second strongest, CP3 is the third strongest color, and CP3 is acceptable in army. If Okay. you are CP4, then you are rejected. So I came in CP3 category, and I was recommended for that, and that is the story. And lesson learned, and this, let me tell you, लाइफ में किसी भी जगह एक बार में I never succeeded. I have to every step, and this goes with most of the people. Most of the people, why people lose, basically they give up. You should never give up, because universe always tests you at every point, and it is up to you. You have to tell the universe that yes, I am committed, determined, I will get it. Right. Sir, how were you feeling? कैसा लग रहा था when the doctor finally cleared you? So again, same, it's a complete AC cycle. You see, Yes. it started from zero, went up when you cleared SSP, came to zero when you rejected in the medical, and then again came back to the highest. So it complete. So life is like that, you know. Everyone's life. It's not mine. Everyone's life. If you peep into anyone's life, it is always a AC cycle. It is always AC. Yes. It is up to you how you tread that cycle. Right. Never leave that path, because otherwise, you must have seen that what you call cardiogram, or जो ये जो अपना दिल का जो करते हैं क्या, ECG, ECG. electronic Yes. cardiogram. Okay, if it is a straight line, you are dead. You are alive only once if there is a ups and down, ups and down. So life Right. is that. One should learn that there is no life without, unless there is a ups and downs. Right. सर तो फिर रिकमेंड हो गए आप एंड देन यू रिपोर्ट टू ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग Yes, कैसा था सर? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? training is awesome. Training की तो मतलब they make you leader out of a human being, normal human being. SSB, what it does, what SSB does is something like, वो ढूंढते टॉर्च का खोखा. खाली ओके. टॉर्च होती है ना, खाली टॉर्च का खोखा ढूंढते हैं कि आप खोखा भी हैं कि नहीं. They don't see that you are an officer. How can you be? You can't be an officer once you are going to SSB. So if you give analogy, it is something like SSB ने आपको खोखा दे दिया कि भाई ये टॉर्च का खोखा है. अकेडमी क्या करती है, उसमें सेल डाल देती है. सेल डाल देती है, आपने बटन ऑन किया और लाइट. Academy does that. So the first day when we reached Academy, it is another interesting situation. So let me first tell you that what mother said when I went to the Academy finally. राइट. She came to मुझे स्टेशन पे आके सी ऑफ करने के लिए आई. देहरादून एक्सप्रेस थी जो गाजियाबाद से जाती है. लास्ट में बिफोर द ट्रेन केम, हॉल्टेड, एंड उसमें बोगी में चढ़ने से पहले she told one thing only. She said, look, I said that you don't leave this job of government and go to army. तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अपनी मन की, लेकिन एक बात मेरी सुन लो अभी. You are going to army is fine now, but if you change any of your habits, don't come back home. This was the underlying statement of her, and her meaning was, don't change your habit, because at home we were all teetotaler. राइट. No drinking, no smoking, no non-veg, pure vegetarian. My grandmother, my whole entire family was like that. So she said, if you change any of this habit, then you should not come back. I promised her, nothing will change.
and till date I am following that. I have not changed any habit despite serving in army for 25 years. But that is not because my mother said it. That is because I never ever developed those taste or habits, whether it is a non-veg or liquor or even eggs. I never developed those tastes, and I never find need for doing that. And I served in all kind of environment, minus 40-degree temperature also. And what I find is you should exercise well everywhere, wherever the extreme conditions are there of weather, and that will sail you through rather than depending on liquor or anything like that. So coming back to the academy part of it, when we reached first day, जाते ही आपको किट वगैरह मिलती है, आपको सामान मिलता है, वो जाके आप कलेक्ट करते हो, और वहीं आपका बार्बर बैठा होता है, वो आपको पूरा जो है ना, इट मेक्स यू सॉर्ट ऑफ कट करके एकदम छोटे जीरो साइज के हेयर. My father, while I was leaving from Ghaziabad, he wasn't there. He came a day or two after that, and he straight came to Dehradun to meet me. And when he saw me, he couldn't recognize me. So, okay. And the very next day, there was a 5-kilometer run. Again, the one very good learning there, that is where I got it. And that is what I still followed throughout my life, and I am good at running now. So, the instructor who was with us, PT instructor who was with us to took us for the run of 5 kilometer very first day. He told us, because normally when anybody runs, who is not professional, your body get very stiff. First half you get very stiff. Reason is that the mind always wanted you to be relaxed. Mind doesn't want to do any hard work. Mind will always tell you, don't do anything. Aram se baitho. So when you are doing something against the mind, it will make you stiff. So running is also like that. You see anybody who is running first time, this part he will always get stiff. Mutti band ho jayengi. He will close the fist and he will make this stiff, and then he's running. That shows the mind is telling, don't run. And that instructor told us, सब ऊपर का हिस्सा ढीला करो. And that is so true. मुट्ठी कभी tight मत रखो. Always keep loose. And this way you are giving signal to the mind, shut up, I am okay, I am enjoying. And then mind will also support you to do that. Because it is not you stop when you feel tired. It is the mind which makes you stop. So that is the learning right in the few days. Many things in like we never shaved it. First time we did shaving. So I used to only cut it by some small scissor at home till the time we were at home. But वहां जाते ही जब दूसरे दिन रेजर यूज कर, so I learned from somebody who was from Karnataka. He taught me that यार ऐसे करते हैं, इसको ऐसे यूज करना है. So these are the few things when you straightway the very first days you start becoming gentleman and officer like, and that is the way the life starts. Right. Any कोई रगड़ा स्टोरीज हैं सर अभी आपके ट्रेनिंग डेज के? There are multiple ragda stories. All stories only. हाँ, तो anything that you would like to share, anything that you Yeah, remember yeah. So अभी तक? I tell you one very interesting story of हमारा एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है भद्रास. Okay. उसमें क्या होता है, भद्रास इज द नेम ऑफ ए माउंटेन फीचर. ओके. और इससे हिल माउंटेन रेंजेस आर देयर, और शिवालिक की रेंजेस हैं सारी. तो वहां आप जो है शुरू करते हैं, रात में शुरू करते हैं डे प्रायर, और नेक्स्ट डे आप आते हो. और आपके पास पूरा पिट्ठू होता है, जो भी 10-15 केजी का वजन वो होता है, प्लस आपके साथ वेपन होता है. एंड द होल नाइट, एंड यू डोंट नो द वेज एंड मीन्स रास्ता नहीं पता है, बस
आप आगे जो वाला बंदा है वो कुछ मैप रीडिंग करके नेविगेशन करता है और सारे लोग पीछे पीछे उसको फॉलो करते रहते हैं और सबके पास थोड़ी सी लाइट टॉर्च होती है और उससे देखते हुए. सो व्हेन यू आर गोइंग दैट यू गेट सो एग्जॉस्टेड एंड द सिचुएशन इज, एक तरफ तो हजारों फीट की खाई है, दूसरी तरफ हजारों फीट की क्लिफ है और आप इतनी सी ट्रैक पे चलते जा रहे हो. आपने जरा सा भी कैजुअलनेस किया तो प्रॉब्ली यू मे बी डाउन और योर वेपन मे बी डाउन एंड इट हैपेंस. किसी का वेपन यदि गिर गया तो वहीं उसी जगह आप रगड़ा भी करोगे, ढूंढ के भी लाओगे वेपन को. देयर इज नो रीजन यू कैन मिस द वेपन, इवन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वेपन. यू कांट afford to lose any part of the weapon, even the bayonet. Generally the people lose out the bayonet from the rifle. आप पूरी रात फिर ढूंढते ही रहिए उसको. So when you do this exercise, you know, some point of time you feel too tired and you are given a break of sometime tell okay 30 second break, 30 second somebody gave you instruction. आप वहीं बैठ जाते हैं और वहीं बैठ के पीछे जो आपका लगा है ना उसको आपने ऐसे लेट के और वो दैट बिकम लाइक ए योर पिलो की तरह एंड 30 सेकंड बिकम लाइक ए यू हैड ए स्लीप ऑफ 30 hours. इन 30 सेकंड ओनली गो टू डॉजो एंड यू फील लाइक कि बहुत अच्छा नहीं. फिर सडनली व्हेन द कमांड इज गेट अप यू स्टार्ट रनिंग अगेन. एंड बाय द टाइम यू रीच नेक्स्ट डे टू योर back to your academy, you find, I remember in my case, आपके जो पैरों के नीचे का तलवा है, you can see the red, you can see the blood is there, is while walking continuously, and that blood when you see it, but the body is such a resilient, such a powerful machine. Within an hour and so, everything get all right. And it is not that you are given a rest that day. Within 1 hour and two, again there is a fallen, again some other activity. The activity could be going for swimming or for the classes or something like that. That is an ongoing process. Ongoing process. No mercy whatsoever it is. And the advantage of that is, the biggest advantage I still recall is, I was very prone to cold, जुकाम, सर्दी and all this. Okay. मतलब साल में 1-2 बार होना ही होना है. But I still remember, academy में whole year I never had any colds, fever or जुकाम or anything. बिकॉज सोचने का टाइम ही नहीं है, वो बीमार पड़ने का ही टाइम नहीं है. दे डोंट अलाउ यू टू थिंक ओके यू आर वो भी हो गए तो आपको पता ही नहीं चला होगा कि कुछ ऐसा हुआ है. नहीं. आई टेल यू, यू नो, समटाइम यू फील कि हाँ फीवरिश है, सब कुछ है, उसके बाद ही तुम्हारा स्विमिंग की क्लास है. अब जाके आपने स्विमिंग में जंप कर दिया, बाय द टाइम निकल के आए स्विमिंग सब कुछ ठीक हो गया, कुछ है ही नहीं. मीन्स होल ईयर, दैट यूज्ड टू बी सरप्राइज मी, स्टिल सरप्राइज मी, दैट व्हाई यू डोंट फॉल सिक देयर एट ऑल. वहां क्या होता है, हड्डी पसली कभी टूट जाए, कभी किसी एक्टिविटी में आपका घुटना टूट गया, ये टूट गया, वो उसके वजह से एडमिट होते हैं लोग. फीवर, जुकाम, सर्दी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, और घर आते ही सारी बीमारियां शुरू हो जाती. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेनिंग. Yes, sir. सर, तो आफ्टर जब ट्रेनिंग खत्म हो गई एंड पासिंग आउट परेड होता है, तो आपने इतना टफ ट्रेनिंग किया हुआ है, तो पासिंग आउट परेड के टाइम पे क्या फीलिंग होती है? सी, feeling is immense. Yeah. Feeling is immense. Firstly, that feeling of putting that pips by your parents, that gives a feeling of sense of an achievement, sense of. But at the same time, it's not only that that you feel great about that, but it's a feeling of responsibility also. It's a great feeling of responsibility. What Chatwood says, that nation comes first, thereafter your man whom you command, and finally it is your welfare. So it's a mixed feeling of achieving something, at the same time being responsible towards your country.
and that is what it taught in the entire training of the academy. Absolutely, sir. Yeah. Sir, so you got commissioned into signals after training. Yeah, yeah, तो yeah. So basically, कोर के बारे में बताइए, बिकॉज ज्यादा बात होती नहीं है अबाउट I, सिग्नल्स, तो आप अगर थोड़ा बताएं तो. I will tell you. See, since I have done that BTech in electronics and communication, so I always wanted, and electronics was a favorite subject of mine. Basically, I always loved physics when I was till 12th, and then natural physics conversion is your electronics. And in army, the electronics, more of it is in the EME. But I opted for EME. Okay. But because of my that degree part of it, electronic and communication thing, I was given signals, because signals is communication. तो ये भी बड़ी फनी चीज होती है अकेडमी में कि जो आप मांगते हो वो आपको नहीं मिलता है. और मेरे साथ वाला जो था वो भी मेरे साथ ही सेलेक्ट हुआ था वहां भोपाल में. उसने कम्युनिकेशन मांगा था, सिग्नल्स मांगी थी, हैं, उसको ईएमई मिला था. ठीक है, he got EME, and so this is what happened. So signals is a wonderful core, and it's a very high tech core, very high tech. Any technology which comes in the market, in the civil market, you must always remember, any technology which comes in the market, the first it comes in the defense. Wherever it is, might come first in the US, may come in India, or may come somewhere. But any technology like DARPANET, जो इंटरनेट आज हम बोलते हैं, सबसे पहले it came in the defense of US. Likewise, in India also, the core of signals is the pioneer of implementing technologies in communication first in India. And the biggest thing in the communication in the signals is, it is the secrecy part. How secure you are. So most of the networks are standalone. Okay. That means they are not connected with the outside world. We have a end-to-end network. End-to-end means if we want to talk from our Siachen, and we want to talk anything in the sea, like Kwarta and all are there naval bases in the Andaman Nicobar, then we have our seamless network, which are fully secured, confidential network. And not only that, we are having the facility which are triple play: audio, video, text. I have been part of such networks, and they have been fully designed and developed for the Indian Army. Technology might be used anywhere, but the implementation is as per our requirement. Our numbering schemes are absolutely unique. Our protocols also as per our requirement. Our media is also heterogeneous. There could be microwave, there could be fiber, there could be line, there could be satellites, all mixed up. But our job as a communicator in signals is to provide connectivity to the last man sitting anywhere on the top of hill, to anybody who is in the jungles or mountains or sea. That is the job of core of signal. And today, even the mobile communication also in the highest secrecy, with the highest secrecy, is available to anyone who is there in the core of signal, especially for the army. It's not only for the core of signal, it's for core of signal provide communication to everyone in the Indian army, which is safe and secure, 100%. Right. That is the job of
In addition to that, it's not only that, even some part of intelligence gathering is also part of core of signal, which involves your electronic intelligence, then communication intelligence. So comment and the electronic int is also part of. So they are separate units which do this. Surveillance, interception, and all. I've been part of this. I may not discuss more in detail, but Sure, this sir. is all part of. Yes, sir. तो सर डेली रूटीन कैसा होता है फॉर एन ऑफिसर इन सिग्नल्स और इवन द जवान इन सिग्नल्स? क्या होता है सर डेली रूटीन? व्हाट डज इट Uh, इन्वॉल्व? yes. So let me tell you, in signals, the first thing which is there is communication report, com report, ओके. communication report. So as a communicator or as a officer in the unit, when you are young officer, we call it a company commander, is the lowest level when you are responsible. Though under the company commander, there may be 4 or 5 officers also. So your first thing in the morning is around 4 or 5 o'clock, giving communication report to your CO, your commanding officer. Now, what all is there in that? All circuits are okay. Means whatever circuits are there. For example, Delhi say there might be circuit to Bangalore, there might be circuit to Calcutta, there might be circuit to uh, means Madras, Chennai. Are they all okay? Means all they are nothing is down. So that is the first thing you do as a report. If anything is down, then you have to support to take action. Or that information should be there, because CO has to in turn give communication report the same thing to his superior, who might be a brigade commander, or he might be the general officer commanding div commander. So this is the part of the reporting channel, that everything, whether it is a voice communication or whether it is a messaging, because we have you have a messaging system in the civil, similarly same messaging kind of systems are there with us. So every report is given that start the day. And then early morning 6 or 6:30 you go for a PT, and after having done the PT, have a break little bit and then go to the office till 2 o'clock. You do the office work. Office work means there is a signal center, like what you call in the civil the exchange. We have an exchange also, we have a signal center. Exchange is for the totally voice communication. Signal center is for the messaging communication, where the confidential messaging is going on through the computers and all. Earlier there used to be teleprinter and all, but now it is. So the person whosoever is responsible for those things, हर आदमी अपनी अपनी जगह जाके अब लग जाता है. Once your that duty is over, evening you come back. Acha, core of signal, everything goes into 24/7, because communication you can't have a break. राइट. Unlike in civil, ठीक है कल जाके ठीक कर लेंगे, आज रात को हो गया कोई गड़बड़, nothing happens. Even for a second you cannot remain out of communication, even for a second, without any reason. So it is 3 shifts. It works in the 3 shifts. Our boys works in the 3 shifts. Officer also remains. Night also the officer duty is also there. Afternoon, then games. You play games, sweat it out. Then in the evening you come back. If you are bachelor, stay in the officer mess. Rest, go to home. And those who have got a night duty, they go for night duties. And rest of the activities of competition in the games, competition in the other kind of adventurous activity, that continue process. There are continued process. And this is normally the life. So you are not stuck in one thing that only you are doing communication. You can do multiple things. You can become a best sports person. You can be best runner. You can be best firer. If you have that kind of talent and passion,
then you will be all encouraged to follow further. You can go till Olympics. राइट। तो सर, सिंस टेक्नोलॉजी यहाँ पे इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, तो अपडेटेड भी बहुत रहना पड़ता होगा, तो उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती होगी आप लोग को बहुत ज़्यादा इन Yes, सिग्नल्स। yes. So let me tell you, जब हमने फौज ज्वाइन करी थी ना, और ज्यादातर मेजोरिटी केस में यही होता है, जब आप फौज जी। ज्वाइन करते हो तो आपको रहता है कि यार अब पढ़ाई से फंदा छूटेगा, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। मैं जो व्यूअर्स है उनको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई से कभी पीछा नहीं छूटता। फौज में कोई पीछा नहीं। फौज में जो जितनी बाहर पढ़ाई की उससे कहीं और ज्यादा पढ़ाई होती है। उसका मतलब ये नहीं है कि डरना है उस पढ़ाई से, वो पढ़ाई अपग्रेड करने के लिए आप, जी। ठीक है, वो डरने। सो वी डू ए मल्टीपल कोर्सेज एवरी टाइम। लाइक जब आप अकेडमी से निकलते हैं 6-8 महीने यूनिट में होने के बाद आप यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए जाते हैं। वो कोर्स खत्म होता है, वापस आते फिर 1-2 साल के अंदर, और जैसे वी डिड ग्रेजुएट एंट्री इक्विपमेंट ओरिएंटेशन कोर्स। मींस जितने आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, अब आप एक साथ तो नहीं सब सीख सकते ना, तो उसका एक कोर्स होता है लगभग 1 साल का। दैट इज वेयर यू लर्न व्हाट ऑल इक्विपमेंट आर देयर इन कोर ऑफ सिग्नल्स। जब आपने वो कोर्स कर लिया, उसके बाद में देन वी आर नॉमिनेटेड टू डू द एमटेक। लाइक आई डिड एमटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर राइट। after having done this second course. But for this course like MTech and all, everybody doesn't go. There is a internal very heavy selection process. There is a written, then there is an interview within the core of signals, and after you get shortlisted, then there is a overall shortlisting. Like MBA के लिए जिस तरीके से वो 9th 10th और 12th के मार्क्स और प्लस फिर आपका परसेंटाइल इंक्लूड होकर तब एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, देन यू आर सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड। सिमिलरली आपका इंटरनल एग्जाम हुआ, फिर इंटरनल इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद में फिर आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है लास्ट 5 ईयर्स में, वो आपकी रिपोर्ट जो है उसके मार्क्स ऐड करके फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट के बनने के बाद फाइनली फिर आईआईटी के प्रोफेसर आके आपका इंटरव्यू करते हैं, देन दे सेलेक्ट यू फॉर एमटेक। सो हियर आल्सो I did not get in the first attempt. Same thing, never give up. And in the first attempt, my candidature was not selected for the MTech. But then I have learned hard way not to give up. Next year I again tried, again appeared, and so it was not that I failed that time. The previous year. Means my candidature itself were rejected. Okay, because they said that IETE at some places is not applicable. Then I brought all those gadget notification from that institute and showed to that this is applicable. This is the order. This is the Government of India orders. I showed them, and then I was fielded for the interview. So I cleared my written within the core of signal, then interview, and then overall merit made. So I was third in the list. Third in the list when this army merit was there. After that, there was a interview by the professors from the IIT Kharagpur. So when that interview happened, and then again after that interview, the merit is made overall. Overall means Army, Navy, Air Force, तीनों का मिला के, Ministry of Defense की तरफ से. Then I was first in the merit. That list. So that struggle at every place is there. Every place you have to find solution to your problems, because your life is your responsibility, your obligation, your duty towards your success, nobody else. जिंदगी में no CBE means no blame, no complain, no excuse. CBE, no complain, no blame, no excuse. The day you learn this, that you are responsible for your success and your failure, neither you will complain, nor you will blame, nor you will give excuse. So जिस दिन आपने ये सीख लिया, आप आगे बढ़ते चले जाओ।
जी सर, बिकॉज देन यू डिसाइड दैट यस मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे ही पता करना है और कोई नहीं। एब्सोल्युटली। सर वो थॉट प्रोसेस होता है ना कि कोई नहीं आ रहा है हेल्प करने के लिए, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। तो वो जिस दिन रजिस्टर हो जाता है उस दिन माइंड चीजें इज होने वेरी लगती हैं। पावरफुल, माइंड इज वेरी यस, पावरफुल, यू नो, माइंड इज वेरी, सी, होता क्या है, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, यू नो। जब आप कंप्लेन करते हो दैट मीन्स यू आर गेटिंग रिड ऑफ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, जब आप किसी दूसरे को ब्लेम करते हो, आप अपने दिमाग को चलाना नहीं चाहते। जब आप एक्सक्यूज देते हो, अगेन यू आर गेटिंग रिड ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप एक्सट्रीम ओनरशिप ले लोगे किसी भी चीज की, एक्सट्रीम ओनरशिप, आपका दिमाग चलेगा और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बट फर्स्ट यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सक्सेस और योर फेलियर्स। यू कांट ब्लेम पेरेंट्स, यू कांट ब्लेम योर स्पाउस, you can't blame your children. राइट सर, एब्सोल्युटली। सर, फील्ड पोस्टिंग्स आपके लिए कौन सी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रही? See, मैं था यहाँ लेह में। लेह ओके, के पास एक जगह है नीमू, और उसके बाद कुछ दिन के लिए फिर मैं रहा। वैसे तो नीमू के अंडर में आती थी वो जो फॉर्मेशन थी। द्रास इज ए प्लेस नियर कारगिल यस, where the temperature goes as low as -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चैलेंजिंग तो क्या मतलब कहना चाहिए कि इट वाज एन एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ, एंड इट्स अ मेमोरेबल टेन्योर, वेरी मेमोरेबल टेन्योर। You know, during winter, it's all around snow. It's white. It's white. There is no tree around because Ladakh is like that. It's supposed to be called the desert of snow, snow desert, total desert, no greenery. But I would like to tell viewers, these are the places to be experienced. And one thing I have learned, नेचर के साथ मर्ज हो जाओ। If that land is there where lack of oxygen is there, so don't be a gamma in the land of llama, we call it. वहाँ के जो रूल्स हैं एक्लिमेटाइजेशन के, गो एंड एक्लिमेटाइज फर्स्ट। देयर इज अ रूल ऑफ दैट कि 5 days you have to first acclimatize. The very first day when you go and report there, you can't even come out of your room. You are not supposed to come out, because if you try to come walk or something, you will feel giddy and drowsy, because at this place in the plains, the level of oxygen is what is that, 9.8 kg per meter square, something like that. That is the pressure of the air, isn't it? या, बट वहां पहुंचने के बाद जब आप 10,000 फीट ऊपर चले गए तो प्रेशर कम हो गया, एयर कॉलम कम हो गया। अब क्या है, हमारा जो सिस्टम डिजाइन है वो तो एनटीपी के लिए डिजाइन है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए। जब हम वहां एबनॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में चले गए, क्योंकि वी आर नॉट डिजाइन फॉर दैट, आई हैव नेवर स्टेड इन दैट, तो वहां जाते ही क्या है, आपका सिस्टम टेक टाइम टू एक्लिमेटाइज, टू टेक एडजस्ट, बिकॉज जो आपकी लंग कैपेसिटी है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आपको ऑक्सीजन सफिशिएंट मिलती है, देन यू सर्वाइव। जब वहां चले गए तो अब आपकी जो लंग्स हैं उनको सेटल होने में, उस लो प्रेशर पर उतनी ऑक्सीजन जितनी आपको चाहिए उतनी लेने में उसको टाइम लगता है। तो फर्स्ट डे यू आर नॉट सपोज टू कम आउट, सेकेंड डे यू वॉक जस्ट 100 मीटर, थर्ड डे यू मे वॉक 500 मीटर, fourth day maybe 1 kilometer, and fifth day you are okay, normal. So you follow the rules at that places. So climatic conditions brings more casualties on those places than any other region, whether it is a Siachen or whether it is Leh Ladakh or any other mountain region. So you follow the system, and आर्मी के जितने भी SOPs हैं या systems हैं इतने well defined हैं, if you follow that anywhere, not only this, nothing is challenging. It's all well set, things are there, and over and above, over and above,
keep exercising. Even though there might not be any activity, but as an individual, you keep exercising. एक्टिविटी वहां होती है, वहां भी पीटी गेम सब होते हैं, सब फिट होता है. बट इफ यू ट्राई टू शेम इट आउट और अवॉइड, देन यू ओनली आस्किंग फॉर योर ट्रबल. But it's wonderful. If you ask my personal experience, the place called from Nimu is very close to Leh. Thereafter, my unit got shifted near Kargil. The place is called Khumbathang. Khumbathang is a place जहाँ चारों तरफ हिल फीचर्स एंड इतना बड़ा फनल बनता है. इट्स वेरी हाईली कोल्ड, वेरी कोल्ड. एंड नेक्स्ट टू दैट लोकेशन वहां एक रिवर बहती है. वो रिवर इन द ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट गेट फ्रोजन. You can see the ice wall on top of that. So the morning, the first thing, I used to go for a jog, 5 to 10 kilometers, and come back. Then the temperature is under your control. Once you have jogged, that day will pass beautifully. So to keep yourself fit, healthy, keep working out or exercise. Nothing will go wrong. You will come back with Right. flying colors. And अपनी ड्यूटी भी अच्छा Right. करोगे, फिट भी रहोगे, कुछ भी होगा भी नहीं. जी सर. सर जैसे वॉर लाइक सिचुएशन में क्या माहौल होता है वो जानना चाहिए. जैसे कारगिल वॉर हुआ था 99 में, तो सिग्नल्स में क्या माहौल होता है सर ड्यूरिंग दैट टाइम. So let me tell you, I was immediately posted after the Kargil war. ओके. Immediately after Kargil war. जहां तक सिग्नल का सवाल है, सिग्नल तो is always in the war. Why it is so? Because चाहे वॉर हो चाहे पीस हो, कम्युनिकेशन तो आपको हमेशा चाहिए, और वो भी 24/7. यू कैन नॉट मिस कम्युनिकेशन इवन फॉर ए मोमेंट. तो मैं लद्दाख की, लेह की सिचुएशन बताता हूँ एक बार कि क्या होता है. मतलब एज आई टोल्ड यू ना, वॉर हो चाहे नो वॉर, सिग्नल्स इज ऑलवेज इन वॉर. रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज नो वन, even for a 10 minutes also, if communication is not there ना, जो आपके फॉर्मेशन कमांडर GOCs और जनरल अफसर कमांडिंग है ना, वो आपका बैंड बजा दे, क्योंकि he can't communicate. हमारे बॉयज आर सिटिंग ऑन द बॉर्डर, इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्शन चाहिए. बिना कम्युनिकेशन के आप कैसे, यू कैन नॉट कमांड. कमांड का एक सबसे बड़ा फंक्शन इज द कम्युनिकेशन, एंड विदाउट कम्युनिकेशन यू कैन नॉट कमांड. So, signal is always in the war, number one. तो मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ. एक बार क्या हुआ कि हम लेह में थे, जहाँ हमारी यूनिट थी. सडनली रात के करीब 10 बजे 11 बजे पता लगा कि एक्सचेंज माल फंक्शन मीन नो कम्युनिकेशन. और क्या होता है एक्सचेंज में? कार्ड्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स होते हैं. वो कार्ड कभी भी कुछ भी बेकार हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है. एक रजिस्टर चला गया, एक ट्रांजिस्टर चला, एक आईसी चली गई, काम गड़बड़ हो गया सब. जी. तो ऐसा ही हुआ. एक्सचेंज वर डाउन, एंड एक्सचेंज इज डाउन, कम्युनिकेशन. अब वो तो थैंक गॉड कि इट वाज नाइट. नाइट में तो ज्यादा कम्युनिकेशन होता नहीं है, अनलेस देयर इज ए आग लगी हो कहीं ऑफ वार लाइक सिचुएशन. बट सुबह होते ही तो कम्युनिकेशन रिपोर्ट देना है GOC साहब को, ठीक है. एंड दैट इज 5 o'clock इन द मॉर्निंग. यू वॉन्ट बिलीव इट. अच्छा, जहां ये खराब हुआ था उस सेक्शन से जो हमारी बाकी जो यूनिट्स थी, क्योंकि एक यूनिट होती है बड़ी यूनिट, उनकी छोटी छोटी यूनिट होती हैं जो करीब 50-50 100 किलोमीटर दूर होती है. जी. 5-6 यूनिट, मतलब एक बड़ी यूनिट है जिसका बड़ा एक्सचेंज है, फिर उनके छोटे छोटे एक्सचेंज लगे हुए हैं. सो दैट इज डिविजनल लेवल से ब्रिगेड लेवल पे एक्सचेंज लगे हुए हैं. तो ब्रिगेड में कम लोग होते हैं, वहां कम छोटा एक्सचेंज होता है. अब वहां कार्ड है, स्पेयर कार्ड. यहाँ स्पेयर नहीं है, बट वहां स्पेयर अवेलेबल है, क्योंकि वहां इसलिए रखते हैं कि वो छोटी जगहों पे हैं, दूर हैं, तो वहां बड़ी जगहों पे फिर भी क्योंकि लेह तो कनेक्टेड है दिल्ली से बाय एयर,
कैन कम, बट जो छोटी जगह है वहां जाने में तो बाई रोड जाने में टाइम लगता है, इसलिए वहां स्पेयर्स रखते हैं। यहाँ भी होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वो कार्ड वहां नहीं था। मी एंड माई सीओ एंड दैट कंपनी कमांडर, आई वॉज द सेकेंड इन कमांड, आई वॉज सेकेंड आफ्टर द सीओ। सारे लोग एक्सचेंज में वहां खड़े रहे, वहां से गाड़ी भेजी गई दूसरी जगह राइट में, डेड ऑफ नाइट, उस ब्रिगेड से लाने के लिए। और वो सारे रास्ते ऐसे ही होते हैं पहाड़ों के। वो चला, सुबह 5 बजे होने से पहले कार्ड वापस लेके आया वहां से, और वो लगा कार्ड उसमें, एक्सचेंज को ऑन किया, ठीक किया। देन सीओ फर्स्ट केम बैक, देन आई केम बैक। जब कुछ होल नाइट all top officers, CO, 2IC and company commander were standing in the exchange till the time it got all right. That is the situation. That is the accountability. That is the responsibility of army officers in Corps of Signals. Now you can imagine, though Corps of Signals always is a war-like situation, but you can imagine in the war, when there is total chaos is there, Right. what could be the situation? So in the normal situation, the peace situation, we were standing there. And we made वॉर it में तो functional before the या com report is given. राइट सर। सर आपने एक और अपने पॉडकास्ट में मेंशन किया था, वन ऑफ योर पॉडकास्ट, कि जम्मू एंड कश्मीर में जब अर्ली 90s में बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी, तो वो कुछ टेप्स रिकॉर्ड करके दिल्ली भेजने होते थे फ्रॉम द फील्ड एरिया। Yes, तो yes. कुछ उस वैसा एक्सपीरियंस है, स्टोरी आपको याद है जो मतलब आप Yeah. अभी यहाँ नरेट कर सके, जो आपने सुना हो, कॉन्वर्सेशंस जो रिकॉर्ड किए हो, इफ यू कैन नरेट सम ऑफ दीज। See, that is a kind of intelligence units, okay, where you intercept the communication of adversaries, and after recording it is sent to the headquarters, where it is analyzed and taken out the relevant information, which again sent to the higher headquarters for making the decisions. Okay, so I was a officer commanding of one such unit, which was uh, far located somewhere in the JNK. So there, since we are across the border, we were basically intercepting our adversary across the border. Then you are able to listen to some funny kind of conversation sometimes. Funny in the sense, like, when you are talking on this STD line, all these things, BSNL line. So when civilian talks, they talk everything. Even the army to civilian or civil to army, also people talk everything. So this, जो हमारे adversary है across में, when we listen to them, sometimes we'll find somebody is talking to maybe his wife, okay, natural, or maybe the girlfriend or something like that. Those kind of conversation also you intercept sometimes, which is no relevance as such, as a military relevance कुछ नहीं, but interception है, है ना? So those are the things. बट वहां की मैं तुम्हें हार्डशिप के बारे में बताता हूँ कि वहां की हार्डशिप क्या थी, जो उसको ऑपरेट करने के लिए, उस लोकेशन पे ऑपरेट। हार्डशिप ये थी कि रोड हेड से जहां ये डिटैचमेंट था, देयर यू हैव टू वॉक एटलीस्ट कंटिन्यूसली 2 hours, एंड द हाइट must be around 3 kilometers, and the slope must be around 70 to 75 degrees. That is the kind of slope you walk. So 1.5-2 घंटे लगते थे वो ऊपर पहुंचने में। और if it is snowing, means if the weather is bad, then as I told you ना, when climb on the पहाड़ों पे, तो एक साइड में आपको पता लगा 200-500 फीट की डिच है, दूसरी साइड में क्लिफ है, और आप इतनी सी जगह में जा रहे हैं,
छोटे से रास्ते में 2 फीट का रास्ता जहाँ पैर रख सकते हो। तो वो जो जगह थी वहाँ वेदर इतना इंक्रीमेंट है बिकॉज़ इट वाज़ मोर और लेस हाई एल्टीट्यूड कि विंटर के टाइम में 8 टू 9 फीट अप टू 10 फीट स्नोफॉल होता है। नाउ इमेजिन जब 8 टू 10 फीट स्नोफॉल हो जाएगा तो क्या हालत होगी कि वो जो जगह है जहाँ पे आप वॉक करना है वो बिल्कुल कवर हो जाती है। तो एक बार की बात है कि अच्छा उस जगह से नीचे आने में और ऊपर जाने में सिर्फ पैदल आ जा सकते हो। कोई रास्ता नहीं है, कोई रोड नहीं है। और जो विंटर स्टॉकिंग भी होती थी, खाने-पीने के लिए 6 महीने के लिए स्टॉक किया जाता था राशन और वो म्यूल्स के थ्रू होता था। जो घोड़े और जो खच्चर होते हैं उनके थ्रू। वो 6 महीने का पूरा आटा, राइस, चावल सब कुछ वहाँ इकट्ठा होता था और वही यूज़ होता है क्योंकि 6 महीने तक आप ऊपर-नीचे मतलब खच्चर नहीं आ जा सकते थे, आप सामान नहीं ले जा सकते। लेकिन आपका जो बैग है, जिसमें आपका सामान है, वो जो आप भेजते हैं अपनी यूनिट, वो तो जाना ही है डेली, वो तो डाक तो डेली जानी है और आनी है। वो करीब नीचे आने के बाद 1.5 घंटे नीचे उतरने के बाद में उसके बाद करीब 5-7 किलोमीटर दूर जाके फील्ड पोस्ट ऑफिस होता है आर्मी का, वहाँ जाके देना होता है। तो ऐसे इस वेदर में एक बार जब हमारी टीम बैग दे के आ चुकी थी और खाली बैग लेके आ रही थी क्योंकि खाली बैग में कैसेट्स आती थी और भरे बैग में कैसेट जाती थी। तो खाली बैग में जो कैसेट जब लेके आ रही थी वो, तो वो जो पार्टी होती है, 1+3 की पार्टी होती है, जो वेपन-सेपन लेके होते हैं सब। उनमें जो फ्रंट वाला जो बंदा था ना, ही वाज़ अ वेरी एक्साइटिंग पर्सन, वेरी एनर्जेटिक पर्सन। ही स्लिप्ड बिकॉज़ ऑफ द स्नो और वो थोड़ा आगे हो गया। जब 1+3 है तो 3 बंदे पीछे रह गए, वो थोड़ा आगे क्योंकि ही वाज़ जोशीला बंदा था और आगे वाला बंदा ही स्लिप्ड फ्रॉम दैट ट्रैक एंड गॉन डाउन इंटू द gorge, maybe of 200 feet or something. And it was night. Night means around 6-7 o'clock, where the weather was, it was raining, snowing, or windy. It's a very bad weather, very bad weather. Now, when this remaining three also they reached on the top, they realized that one guy is missing. He has not reached. Then they realized that guy is something gone wrong. Then the search party came from, and me and my CO and my commander, all were down. And that day was the visit. Visit was the senior officer. When we got this message, immediately, since I was the in charge, I ordered the people to go and find out and get in that guy. So people came up because ऊपर से वो नजदीक था जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ था. They came up. They listened to that somewhere the sound is coming, moaning sound, करहाने की आवाज आ रही. So that boy who was fallen down, बातचीत करके उसको ऊपर निकाल दिया. वो तो निकाल दिया लेकिन रात में वेपन नहीं. And army में losing a weapon is the biggest crime. You cannot afford to lose your weapon. बंदा तो सही आ गया बंदा, लेकिन ठंड में जो 2-2.5 घंटे में उसका बुरा हाल हो गया था. तो फिर वहां ऊपर हमारे पास मेडिकल असिस्टेंट भी होता है, तो उसको पूरा हीट वीट दे के करके उसको तो नॉर्मल किया, वो ठीक हो गया. नेक्स्ट डे देयर वाज ए नीड टू फाइंड आउट द वेपन. नाउ फिर एक सर्च पार्टी दूसरे दिन गई, फिर वहां जाके उसको ढूंढा पूरे एरिया को और वहां वो जो है वेपन. So this is the kind of hazards we live in when you are an army. Because even if you lose the weapon, you are court-martialed. Or you can lose the life at the flick of second. Because the kind of terrain you are working in, kind of weather you are working in, kind of environment you are working, and there are all around there terrorism is there. Terrorists are there. Because that area is like that. Then thereafter there have been casualty. One of our officer lost life while doing this, carrying the bag and all, after I left from that place. So everything is hostile. Weather is hostile, environment is hostile, but you have to work for the sake of nation safety and the people of the nation. So this Right. is what the situation is. Lot of uncertainty and responsibility coming together.
Yes, Lot of responsibility and lot of uncertainties as uncertainty is always there, well. Yeah. but that is where your responsibility, your ingenuity, your taking action comes to handy. Right. Your decision making power and quick decision. Quick decision. Action is the only way. Action is the only way to find the solution to the problem. And the life is like that. In the life also the same thing happens. Life, see, I always say that when the life itself is uncertain, then why to bother about anything else? Right. जब जिंदगी ही सर्टेन नहीं है तो दूसरी चीजों की क्यों चिंता करनी? राइट, राइट। जी सर। सर, जब आप रिटायरमेंट का सोच रहे थे, जब आप रिटायरमेंट लिया आपने, तो कैसा फील हो रहा था सर, इतने साल के सर्विस के बाद? मिस करते हैं आप अभी भी Of आर्मी course, लाइफ? of course. Once you are a soldier, you are always a soldier, whether in the army or not in the army. See, nobody wants to leave. Let me tell Yeah. you, nobody wants to leave. But sometimes, no, circumstances makes you do that. In my case, I can talk about myself. I already served by then around 23 year plus. 23 year plus. Then one side, your parents are getting older. And all around 23 years, you have not given any time to your parents. Not given any time because you are always out. आप साल में एक आध महीने के लिए मुश्किल से आ गए तो आ गए, वो भी जरूरत हुई तब नहीं पहुंचे आप ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत जब नहीं, जब छुट्टी मिली तो आप आ गए. दूसरी तरफ योर चिल्ड्रन आर ग्रोइंग इन देयर एजुकेशन गेटिंग अफेक्टेड because every 2 years from this place to that place you are shifted. I got posting more or less 2 or 2.5 years every day. And thirdly, when you find that whatever contribution you could do best, you have done it. Thereafter, no more. You are looking forward to challenges. You see, everybody looks for challenges. Right. Everybody looks for responsibility. Responsibility comes when you grow further. So that time you decide कि यार मेरा part play हो गया जितना था. Let me explore something else. So that situation come to me sometime in 2008, and I thought, let me just challenge myself in the unknown world. An unknown world was the civil world, because where I have again to learn swimming. It is something like you are thrown into the sea in the darkness and you have to learn swimming yourself because you don't know anything about the civil. So when I prepared myself. Though, of course, I got an offer from my headquarters to do the PhD in cryptography from the same IIT Kharagpur. I was given this option. But I said, because, since I have done MTech from IIT Kharagpur, there was a condition that I have to serve after having done IIT 15 years if I want to leave the army. So that was a requirement. So I said, after MTech, if it is 15 years, if I have done PhD also from here, then they will not leave me at all. So I said, nothing doing. Let me now do something else. So when I quit, I had three options with me, three jobs at home, at hand. Again, means same way. Before joining army, my situation same way. I had Tech Mahindra, I had Ericsson, and I had Rolta India Limited. So I chosen one, Rolta India Limited. I was given offer to join in Gurgaon, and I already by then
bought a flat in Gurgaon. So I decided to come to Gurgaon, settle my family here, children education also. My son was coming that time in 9th class, daughter was coming in 6th class, 4th or 5th class. So, and already done my bit of contribution to the armed forces of 24 years. So I was pretty okay. But yes, as you rightly said, for me, getting adjusted to the civil environment was not all that difficult. In the sense that I have already worked in the civil for 3-4 years, so I knew that how civil environment works. And going through the interviews and talking to the people and all, I had a bit of experience and quite confident. That's why I landed up 3 jobs even before last day of my army. So I had an option to go which one to join, and joined and continued. And I continued in one company for 11 years continuously. That was Rolta. And another 2 years in another company, 13 years continuously, and in Gurgaon only. I didn't go anywhere. I have decided, I have already been all around the countryside. I don't want to join that job where I have to again live away from my family. So aim was to take care of my parents and family. Yes. So what after corporate stint के बाद Yes, what are you that doing now? is another. You see, I always wanted a change in the life, and that change was, when I joined corporate, and I seen the people like you at your age, those working for few years, 5 years, 6 years, or in the age group of say 30s, 35, and so mid-career professionals. What I realized, despite they having all capabilities, all kind of academic excellence, but they are not living their life fully. What I mean to say by they are not living life fully, either they are having not good health, they are not having good health. If they are having good health, then they are not having good family life or good relationship. If they are having both, then they are not financially viable. Somewhere they are lacking in the health, wealth or relationship. तीनों चीजें नहीं हैं उनके पास, and they are suffering, they are victim of their own situations. उसका रीजन क्या था कि they are quite afraid, quite fearful of taking action. And why? Because by the time he become a age of 35, this thing, he has a children who are school going. He has some flat also जहां उसको EMI भी दे रहा है, और he has a parents also to look after them, and he is not having time, adequate time to give to them, and he is sandwiched between these responsibilities and the 9 to 5 job. And अपने लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं है. He doesn't have time for himself. So he's stuck so badly that he can't take a decision. He can't take a courageous step. Even if he is being sandwiched or he's not enjoying his job, he's not doing well or he's not happy there, he can't think of quitting or changing or taking action to do something better, because he doesn't know what he don't know. So he's not living a life. He's just living for living. He's not living for the life. Corporate में क्या है कि they are not bothered.
दे आर नॉट बॉदर्ड कि आप बिना हेलमेट के आ रहे हो या हेलमेट के आ रहे हो. दे आर नॉट बॉदर्ड कि आज आप बीमार हो या मेंटली अनवेल हो, डिप्रेशन. नोबडी. दे वांट देयर आउटपुट. उनको तो अपना टारगेट चाहिए बाय द एंड ऑफ द ईयर. बट ये बंदा जो है, जो मिड करियर प्रोफेशनल है, वो उतना पैसा, उसे सोचने का मौका ही नहीं है. एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज कि दिस कम्युनिटी नीड है. दे नीड टू, बिकॉज हमें होता क्या कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है ऐसा है कि इस एजुकेशन सिस्टम में कोई नहीं तुम्हें पढ़ाता, कोई नहीं समझाता, कोई नहीं सिखाता कि हाउ टू लिव लाइफ. दे ओनली टीच यू हाउ टू बिकम ए 9 to 5 वर्क. Even if you become a VP or something, still you are not enjoying the life. You are not living the life. You are not living the life. And that is where I decided how to help this community. So I got into the self-development industry, and I myself realized many things that I should have learned too early. I am also quite late. And what I mean to say is that, the fundamental thing for every human being is that being happy. It is not having a lot of wealth. It is not having a lot of materialistic thing. It is that how you be happy. So you cannot be happy if you are unwell, if you are unhealthy. Can you be happy? Any amount of money can make you happy unless you are healthy. So you have to take care of your health first. Okay, now you got a health. You got a wealth also. Can you be happy if you are not having a healthy relationship at home? Again, you cannot be happy. तो कौन बताएगा, कौन समझाएगा इस बात को आपको कि हाउ टू हैव ए हेल्दी रिलेशनशिप, हाउ टू हैव ए गुड हेल्थ? These are very fundamental things. And then after studying this thing, I made a program which I call it a how to become fearless and super confident to win life like a warrior. And why I say fearless, because fear is one fundamental factor जो आपको एक्शन लेने से रोकता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि आप फियरफुल हैं, आप जॉब छोड़ के स्विच ओवर नहीं कर सकते क्योंकि आपको डर है कि कहीं मुझे कुछ नहीं मिला तो कैसे करूंगा, क्योंकि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन आपने कुछ वर्कआउट ही नहीं किया, आपने कुछ सेकंड प्लान ही नहीं किया. आप एक वन स्ट्रीम ऑफ इनकम पे डिपेंड है, वो कट गया, आप कट गए. आपने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं, इसीलिए आप वहां बंधे हुए. चाहे आप कितना ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आप टॉक्सिसिटी में जी रहे हो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप जीते रहते क्योंकि आप एक्शन लेने का करेज ही नहीं है. करेज नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी ने कभी सिखाया ही नहीं. सो सबसे पहली चीज आदमी की जिंदगी से, इफ यू कैन रिमूव द फियर. और फियर ऐसा नहीं है कि ये कोई बुरी चीज है, नहीं. फियर एक नेचुरल फिनोमिना है जो हमेशा होगा. एक नेचुरल इमोशन है, एज ओल्ड इमोशन है, बहुत पुराना इमोशन है, रहेगा ही रहेगा. इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउ यू ओवरकम दैट फियर एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम. एंड इफ यू कैन ओवरकम द फियर, एंड टू ओवरकम द फियर यू हैव टू टेक एक्शन. So this program is how to become fearless and super confident to win life like a warrior. And why I say to winning the life like a warrior? Because, life is like a battlefield. So if life is like a battlefield, then why don't we fight it like a warrior? अरे भाई, जिंदगी को हम बोलते हैं ना यार, जिंदगी तो बहुत बड़ा युद्ध की तरह है जी. वॉर की तरह है, बोलते हैं ना अक्सर है. अरे जब जिंदगी को पता है कि उसमें वॉर की तरह है, तो यार तुम वॉरियर बन जाओ ना. You become a warrior because there is no other way out. Yeah. There is no other way out.
You have to be fighter. You have to fight like a warrior. Don't give it up. Don't give it up to circumstances. कि अरे हाँ तो ऐसा ही होता है यार, ऐसे ही रहूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा क्योंकि मेरी जिंदगी ही ऐसी बनी है। ऐसे थोड़ी होता है, जिंदगी तुम्हारे हाथ में, तुम बना सकते हो. So that is the tagline of mine, is win life like a warrior. Now warrior is my, I'm not saying that warrior means that you put on a uniform and take a weapon and go to the border and become a fighter like. It's not that warrior. The warrior could be at any field. Sitting in the corporate, he could be a warrior. And warrior means, this is a 7-step program of mine. W means winning mindset. You should have a mind of a winner. Come what may, I will win. So the first letter of warrior is W, winning mindset. The second letter of warrior is A. That is, you should have attitude of gratitude. That means that whatever you are today, it's just not because of you only, it's because of many people around you. Your friends, your teacher, your parents. So be grateful, and the universe, जो भी कुछ हो, be grateful to that. क्योंकि आपसे बहुत कम हीनता वाले लोग आपसे बहुत नीचे हैं. आपसे ऊपर है, उससे कहीं ज्यादा नीचे हैं. तो be grateful whatever you are. Then next letter is R. That means remove clutter from your life. And clutter means what? Toxic people जो है उनसे दूर रहो. Toxicity remove करो. Physical clutter, that is physical. Mental clutter, negative thoughts को remove करो. Remove the negative thoughts. Mental clutter. Emotional clutter, be emotionally strong. Then the सबसे बड़ा जो clutter आजकल है digital clutter. दिन रात मोबाइल पे टक लगे हुए, लैपटॉप पे लगे. अरे कुछ टाइम अपने को दो यार. Have some me time. So that is digital clutter. Next letter again is R. After having done these three things, winning mindset, attitude of gratitude, removing clutter, you are reinventing yourself. जैसे वर्जन 2 आता है ना सॉफ्टवेयर का, आपने ये 3 चीजें कर ली तो you will become a version 2 of yourself. You are reinventing yourself. The next letter in this I, you become someone after reinventing yourself, someone who inspire others. The next letter after I is O. That means overcome your procrastination and the fears. Fear की वजह से अरे ये करूंगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, तो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते. प्रोक्रेस्टिनेट करते, अरे मैं जिम चला गया और कहीं मैं दौड़ लिया, पता लगा मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए. फियर. प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, काम ही नहीं करेंगे वो. फियर. सो ओवरकम योर फियर्स एंड प्रोक्रेस्टिनेशन. यदि आपने 6 स्टेज यदि कर ली वॉरियर की, the 7वीं स्टेज इज आर, then you reap the reward of your life. Your life will become beautiful. And that is the program, how to become fearless and super confident to win life like a warrior. And that warrior is, everyone is a warrior. You have to just find out, take out that warrior within you. छिपा हुआ है आपके अंदर, हर एक के अंदर. Everyone is unique, everyone is warrior, provided you have to explore, be self-aware, find out that warrior. Then Right. your life will be beautiful wherever you are. Absolutely. सर कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे फॉर यंगस्टर्स जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? Yes. See, first thing is that army is not just a career. It is a way of life. यदि आपको उस तरह की जिंदगी जीनी है जहां सेल्फलेसली you have to work 24/7. First thing is the nation, then the man you command, and then
your welfare. If you can follow that philosophy first, army is a wonderful life. It's a way of life. It gives you lot. If I am today, whatever I am, it's because of army. So decide first, then you have to work hard to become that. If you want to become an officer, पहले ये मत सोचो कि मुझे पैरा में जाना है सबसे पहले. अरे पहले पैरा में जाने से पहले आर्मी में तो जाओ. वहां तक पहुंचने के लिए, so take step by step. First make yourself prepare for a competitive exam, then prepare for SSB. Then once you get commission, then you think of something that you wanted to go to para, or you wanted to go score up signal, or you wanted to go in whatever is your passion is there, or whatever you want to do. So take a one step forward. And जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखो, जरूरी नहीं है कि इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द आर्मी, ओके, बहुत से लोग जो है बहुत पैशनेट होते हैं और बाद में नहीं सेलेक्ट होते, तो कोई बात नहीं. आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं नेशन के लिए, आप कहीं भी रह के कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जॉब में हो. बाय बीइंग ऑनेस्ट, बाय डूइंग योर जॉब 100%, बाय टेकिंग 100% ओनरशिप ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग, 100% ओनरशिप. And let me tell you, again, remember these words. Life is a battlefield. And if it is so, then why don't you fight it like a warrior? Be a warrior of your life. Always a warrior of your life. Wherever you are, you will live a wonderful life. That is my advice to all youngsters who are watching this. Never give up, and you will be successful, provided 3 चीजें: courage, commitment, and consistency. Absolutely. Yes, sir. Thank you so much, sir, for taking out time to speak to us. Your story has been one of perseverance and resilience, and I think a lot of people will take inspiration from it. Thank you so much, sir. Thank you, Adit. I am really happy that you gave me an opportunity to talk about my life and talking to your viewers. Thank you so much. Pleasure is all ours, sir. Thank you. Pleasure.